Good evening, everyone. This is Abhay. Uh, if you can hear me, somebody please write in the chat that you can hear me. Yes. Yeah. Am I audible? Yes. Okay. Great. Thank you. Thank you. Thank you, Rahul, Abhilasha, everyone. Thank you. Okay. Great. As we all know, we are here today to discuss and listen from Mr. Himanshu Nagpal. Himanshu has joined in. Himanshu, can you hear me? I had muted yourself. You can unmute yourself, Himanshu. Yes, sir. Yes, sir. Great, You're audible. Himanshu, welcome, and thank you for coming in. I know you have had a busy day today, but it's a pleasure. We have got about 46 people already with us here, which to my mind for commerce and accountancy is a good number. I used to think कि बहुत कम लोग शायद optional लेते होंगे, but it's a great thing. So I don't want to take too much time. We all know about Himanshu, everyone. Himanshu cleared this exam, 2018 exam, and he got rank 26 in his very first attempt. And he is UP Cadre IAS. He's undergoing training right now. And his optional was, of course, commerce and accountancy. He got 288 marks. With that quick introduction, I'll hand over to Himanshu. Himanshu, the idea today is to discuss whatever you think you want to share your strategy, how to prepare and go about commerce and accountancy as an optional subject for civil service exam, and in general, even a beginner, etc. But specifically targeting, the after prelims time, the 3 months that we get from prelims to mains, what are the things we should focus upon, or what have been your experiences, roadblocks, sources, whatever. So we can discuss that. So we'll take about 20-25 minutes, maybe let's say till 10:30. Himanshu, you can discuss your thoughts, and then after that we'll open up the platform for questions. So at that time I'll just intervene again and we'll take up questions one by one. I'll request everybody to ask the question like by speaking and not writing in. I want it to be more interactive, but if there's a trouble you can type in as well at that time. And for the information of all, this session is going to be recorded. So I just have to tell you so that later on you don't file a case against me कि मेरा record कर लिया. Your participation itself is a confirmation that you agree to be getting recorded. So all right, Himanshu, over to you. You can begin now. Thank you. Am I audible, sir? Yes, you are perfectly audible. Okay. So, just a brief introduction. So, as sir has already told, my name is Himanshu Nagpal, and I graduated in commerce from Hansraj College in 2017, and I also gave 2 stages of chartered accountancy, CA Foundation and CA Inter, and I also got an All India rank 9 there. So, like, I had this bit of interest in commerce and accountancy already before taking up this as an optional for civil services. So about commerce and accountancy, it's given how targeted of an optional this is. Like it's very rare to find anyone who hasn't done either BCom honors or chartered accountancy or MBA to have taken up this option. And every year, even this year, like around 10-11 people I see every year in top 100 getting through civil services from this optional, which tells a lot about it. To shift our approach accordingly, we have to demarcate every step, and along with giving practical solution, we have to give the theoretical background of every step. For example, there's a question on dividend. So a particular Walters model, for example, though I don't remember exactly what it was, but somewhere कि अगर एक छोटा सा question है Walters model के ऊपर, so you practical question है, so you solve it first, you give step by step approach, एक page में हो जाता है normally Walters model का question, and then you also have to explain the assumptions you've taken, the notes you were supposed to give on every step, and also a brief explanation about Walter's model. So this is what is different from what it was in graduation. We have to elaborate our approach. We have to make sure that we do not miss anything. And often in practical questions, it happens कि 15 में से भी like
11, 12 you can get if it's perfectly fine. It's perfectly fine. So one can even get a score of like 170, 175 very easily if practical questions have been of like half of the paper and you've approached it right. So 170 tak ka score is not that difficult. Although in my attempt also, like what happened, practical part was a bit difficult, but it doesn't happen normally. 2018, it was unusual that the part of practicals were from mostly CA finals. And you also have to prepare of that level only, not of CA final. So graduation तक की books जो रहती हैं, for example accounting के अंदर JR Monga और मैनेजमेंट के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो बेसिक बुक्स ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी यूज करते थे, VR रस्तोगी थी, एंड देन जैसे अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स किया होगा तो आशीष कालरा की बुक्स थी. तो दोज बुक्स यू कैन रेफर. एंड when it comes to preparing some like कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसके अंदर. एक पेपर 1 के अंदर theory is also important because 10 markers के 5 question in part 1 and 10 markers के 5 question in part 2 are compulsory for everyone to attempt. So for that makes it of 100 marks. Theoretical you have to do. There's no option in that. So what I did in every chapter that I used to read, for example, I'm reading cost of capital. So I'll 3-4 page के अंदर I'll make notes of every approach of what is cost of capital, what are the different theories on cost of capital. 3-4 pages के अंदर I used to write based on the past year question papers also. Like they are very 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 important. They'll tell you what sort of questions UPSC asks in commerce and accountancy. क्योंकि ग्रेजुएशन में कई बार यू विल आल्सो फील व्हेन यू लुक एट द पेपर क्वेश्चंस आर अ बिट डिफरेंट व्हाट दे वर यूज्ड टू इन ग्रेजुएशन. सो ऑलरेडी यू व्हाट यू नीड टू डू, हर एक चैप्टर के अंदर से यू मेक योर ओन नोट्स. डोंट रिलाई ऑन एनी पर्टिकुलर वन कोचिंग और एनी वन बुक. Make sure you read everything but you make your own notes. For commerce and accountancy theoretical portion at least. तो मैंने क्या किया था, जैसे एक चैप्टर पढ़ रहा तो 2-3 पेज के इसके नोट्स बन जाते थे और उसको लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऐसे मेरे पास 30-35 पेजेस का हैंड आउट हो गया. सिमिलर फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, सिमिलर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं तो बायबैक एक पोर्शन है, स्वेट इक्विटी एक पोर्शन है. तो बायबैक की क्या स्टेपी की कंडीशंस हैं, क्या कंपनीज एक्ट के अंदर क्या कंडीशंस है, बायबैक कंपनी क्यों करती है, बायबैक के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये एक पेज बन जाएगा इसका. ऐसे ही इफ इट डूइंग प्रेफरेंशियल शेयर्स उसका एक पेज बन जाएगा. सो मेक श्योर ऐसे ऐसे करके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यू विल हैव 25-30 पेजेस के नोट्स. तो ऐसे कर करके टोटल तुम्हारे एक रजिस्टर में यू विल हैव होल ऑफ थ्योरी ऑफ योर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी. इट विल बी इमेंसली हेल्पफुल, इमेंसली. जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, we often have this confusion कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने हैं. अब तो शायद like Ind AS are only relevant मेरे टाइम पे because accounting standards and Ind AS both were relevant. So now तो Ind AS only relevant and Ind AS के लिए accounting standards के लिए rankers classes के they give this summarized flow chart based accounting standards in Ind AS के भी. So you can refer that. You don't have to really join coaching or take its notes. You can just like you'll have one of your friend who would have joined this coaching or would have taken its notes. उनसे जाके बस photocopy करा लो some of the relevant portion. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे हो जाएंगे. थियोरेटिकल क्वेश्चंस की अप्रोच बता दी. देन प्रैक्टिकल के अंदर व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज नॉट टू जस्ट मैच द आंसर. ऑफन वी हैव लाइक कॉमर्स पीपल हैव दिस थियरी, आई हैव दिस इन माइंड कि बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए, फाइनल आंसर सेम होना चाहिए, नहीं तो आंसर खराब है. यूपीएससी ये नहीं देखता. यूपीएससी लुक्स फॉर योर अप्रोच एवरी स्टेप एंड इलैबोरेशन ऑफ दैट स्टेप. इफ दैट इज राइट, योर assumptions आर राइट, देन एक दो नंबर कटेगा क्योंकि तुम्हारा फाइनल आंसर सेम नहीं, तुम्हारी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, बट इट वोंट अफेक्ट लाइक फंडामेंटल ऑफ योर आंसर. तो ऐसा नहीं कि यूपीएससी कुछ मार्क्स ही नहीं देगी. तो मेक श्योर योर अप्रोच वाइज फाइनल आंसर ठीक आ जाए, इट्स वेल एंड गुड. नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, इतना कोई बड़ा लोड लेने की बात नहीं. एंड इनकम टैक्सेशन क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है,
तो इनकम टैक्सेशन के लिए मैंने क्या किया था, आई रिलाइड ऑन रैंकर्स क्लासेस नोट्स, क्योंकि इफ यू रीड सम अदर कुछ कॉलेज की बुक या कुछ भी बुक तो बहुत डिफिकल्ट लगने लगता है, और कुछ ही सेक्शंस इनकम टैक्सेशन के जो यूपीएससी पूछता है और हर बार सिमिलरली रिपीट होते रहते हैं, तो उन सेक्शंस को रिलाई करने के लिए और उन थ्योरी के क्वेश्चंस को रिलाई करने के लिए रैंकर्स क्लासेस के नोट्स वर वेरी गुड. सो यू कैन एंड आल्सो वाजीराम क्लासेस के I joined Vajiram Commerce and Accountancy optional की test series. So sir there was really helpful in regarding the theoretical part. So you can also take its notes. He has made already 10 markers के एक summarized version. So you can also refer that. They'll be easily available in the market, or some of your friend would have it. Practical में finance इनकम टैक्सेशन हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि रस्तोगी की बुक इज वेरी नाइस. कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑल्सो यू कैन आइदर रिलाई ऑन रैंकर्स क्लासेस के नोट्स, बिकॉज उसके अंदर काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और मोस्टली इट कवर्स द होल स्पेक्ट्रम ऑफ द क्वेश्चंस यूपीएससी आस्क्स. एंड इफ यू ऑल्सो रेफर दैट बेसिक बीकॉम ऑनर्स का कॉस्ट अकाउंटिंग का बुक, दैट विल ऑल्सो डू. But do not go for cost accounting का CA इंटर तक का syllabus, because I feel it's more difficult than what UPSC expects you to solve. And then we come for financial accounting. Financial accounting basic 4-5 तरह के questions आते हैं, like company corporate accounting के. If you look at corporate accounting में either you get the question of making a balance sheet, or you get a question of share एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, वो टोटल जो इक्विटी का बायबैक का होता है या इक्विटी अलॉटमेंट का क्वेश्चन होते हैं, तो उनके 5 से 6 तरीकों के क्वेश्चंस रहते हैं कि किसी तरीके में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करना है, किसी तरीके में डिस्काउंट है, किसी तरीके में कुछ है. तो हर एक तरीके का जो क्वेश्चन है, मेक श्योर यू हैव लाइक ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर देयर इज ऑफन अ चांस दैट यू विल फॉरगेट व्हाट द ट्रिक वाज. तो मैं क्या करता था, आई यूज टू जैसे एक चैप्टर है उसके स्टार्टिंग में एक पेज लगा के अटैच कर लेता कि दीज आर द थिंग्स आई गेट रॉन्ग एट, लाइक ये चीज मैं गलती कर देता हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम. सो आई ऑलवेज रिमेंबर दैट आई डू नॉट डू दिस मिस्टेक स्टार्टिंग से. लाइक आई रीड द चैप्टर, आई नो दिस इज व्हाट आई कैन डू रॉन्ग, सो आई जस्ट रीड इट इन एडवांस सो दैट आई डोंट डू इट रॉन्ग. और पेपर से पहले जल्दी जल्दी से वो पढ़ लो कि ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है. सो फिनेंशियल अकाउंटिंग ऐसे हो जाएगा, and cost accounting done, and then FM Rastogi I told you like simple questions आते हैं, कुछ complicated नहीं होते, और it's very much mark fetching, because financial management के questions कैपिटल बजटिंग के थोड़े लेंदी हो सकते हैं, बट यूपीएससी नहीं पूछते इतने लेंदी और इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस ट्राई टू अटेम्प्ट as much as you can. They are really marks worthy. And then income taxation I told you already, Rangus classes के notes are really nice. रिगार्डिंग पेपर 2 के अंदर भी पेपर और ऑडिटिंग आई फॉरगॉट. ऑडिटिंग के अंदर बहुत ही लिमिटेड पार्ट पूछते हैं, और रैंकर्स क्लासेस के नोट्स आर सफिशिएंट फॉर यू. उसके अलावा इतना कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा, रैंकर्स क्लासेस के नोट्स अच्छे हैं उसके लिए. एंड व्हेन वी कम फॉर पेपर 2 25 to 50 marks, totally theoretical. And I remember when I used to take up the test series, so what used to happen, I used to score very well in paper 1, around like 165 170 in all the papers. In fact, that was the paper I thought would scale me through if ever I clear UPSC. I thought paper 1 would be the one which will scale me through, because I used to score very poor in GS or essay. और पेपर टू में कभी 130 से ज़्यादा लाइक मैंने 8 टेस्ट लिखे थे, दोनों के मिला के पेपर 2 में कभी आई डिडंट स्कोर 130 प्लस एवर. बट फाइनली व्हेन आई सैट फॉर द फाइनल एग्जाम्स, तो पेपर 1 में, बिकॉज आई टोल्ड यू ऑलरेडी व्हाट हैपेंड पेपर 1 के बाद, बिकॉज इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू लाइक सिट देयर. तो पेपर 1 में कुछ नहीं, बिकॉज none of the final answers were correct for me. I had to leave 15 mark का एक question. So after paper 1 I was very depressed कि this was the paper I thought will scale me through, and that paper didn't went fine. So I went back home, अपने जो फ्लैट था मेरा राजेंद्र नगर में, I went there. तो my flatmates and all told me कि you should at least give कि लास्ट एग्जाम बचा, तो 8 एग्जाम दे चुका है, तो एक एग्जाम देने में क्या दिक्कत है.
तो मेरा एग्जाम सेंटर वाज लाइक 5 मिनट्स, वो वही सीपी के बगल में ही था। तो आई वेंट देयर और आफ्टर पेपर 2 आई रियली फेल्ट कॉन्फिडेंट बैक अगेन, क्योंकि पेपर 2 वहाँ क्या हुआ था एग्जामिनेशन हॉल में, बिकॉज द क्वेश्चंस, द अप्रोच दैट आई यूज फॉर द प्रिपरेशन, maybe it wasn't right for the test series, but it was very much right for the final paper, because I used the past year papers and many of the questions were repeated again in this year paper, and I had practiced all the past year question papers very thoroughly, very very thoroughly. तो पेपर 2 के लिए क्या करना है? पेपर 2 के लिए एक तो जो बाजीराम के नोट्स है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के पेपर 2 के, तो उसमें 5 मार्कर्स के 10 मार्कर्स के सर हैज मेड कंसाइज नोट्स ऑफ लाइक ये टॉपिक है। एक 10 मार्कर्स में क्या पूछते हैं, एक वर्ड दे देते हैं, एक अप्रोच देते हैं, नेगोशिएशन फॉर एग्जांपल, नेगोशिएशन एक दे दिया, या मोटिवेशन का कोई अप्रोच दे दिया कि व्हाट इज दिस मॉडल ऑफ मास्लोस मॉडल ऑफ मोटिवेशन, तो उसके ऊपर लिखो। मतलब सिंपल सिंपल, उसमें इतना कुछ वो नहीं आता है, कई बार ऐसे टर्म्स आ जाते हैं विच यू डोंट इवन नो। सो लाइक पेपर 2 के अंदर 10 मार्कर्स के लिए मेक श्योर यू हैव रेड लीडरशिप, मोटिवेशन, इन सब की जो जितनी थियरीज है ना, सबके टर्म वाइज तुमको ये पता रहना चाहिए इसके अंदर बेसिकली है क्या। बाकी तो बिल्ड हो जाता है, बाकी लाइक इट्स इजी टू एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यू कैन राइट, बट यू नीड टू नो लाइक व्हाट इज दिस अबाउट, व्हाट इज द बेसिक क्रक्स ऑफ इट। तो एक तो वो वाजीराम से अपने नोट्स ले लेना 10 मार्कर्स के कि टर्म वाइज क्या उसकी एक्सप्लेनेशन है, और रैंकर्स की भी सिमिलर नोट्स ऐसे ही आते हैं, तो यू एटलीस्ट रीड बोथ ऑफ देम एंड फाइनली मेक योर ओन नोट्स एटलीस्ट फॉर 10 मार्कर्स। बस 10 मार्कर्स पेपर 2 के अंदर बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, वहीं मतलब गेम बिगड़ता या बनता है 10 मार्कर्स के अंदर। तो उसके अंदर अपनी एक लिस्ट बना लो 10 मार्कर्स के जो टर्म्स पॉसिबली पूछ सकते हैं, उसके अंदर उसका क्रक्स क्या है, ये थियरी है तो इसका क्रक्स क्या है, ये थियरी है इसका क्रक्स क्या है। पेपर से 5-10 मिनट पहले भी इट विल हेल्प यू अ लॉट टू रिवाइज कि अच्छा ये था ये था, अंदर का मटेरियल तुमको याद रहेगा, बट क्रक्स अगर याद रहा ना कि दैट क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, इसका लिमिटेशन क्या है, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं। और हर एक के अंदर व्हाट आई हैड कि मैं हर एक के अंदर एक डायग्राम या फ्लो चार्ट ऐड रखता था हर एक चीज के अंदर। कोई भी मोटिवेशन मॉडल है, कोई भी नेगोशिएशन अप्रोच है, एनीवेयर आई हैव दिस फ्लो चार्ट और अ पिक्टोग्राम रेडी। एंड कुछ भी मेक श्योर if you do another thing in paper 2, that if you use contemporary examples either from the government or from the private sector as an example to mention okay this is the theory and this is the use of it, like for example railways is like service तीनों merge कर रही हैं railway traffic services, railway personnel services, railway account services. So in what practice of human resource management could you relate to it and how would it help? If you do this successfully in paper 2 while only like making your notes, तो काफी 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 हेल्प करने वाला है तुमको मार्क्स स्कोर करने के लिए व्हेन यू सिट एट द एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि वहां पे एकदम से तो याद नहीं आएगा, it won't come to you naturally in the paper hole, but if you have that in your notes now with total like कि examples की एक list बना के रख लो कि अच्छा जैसे ये वाला एग्जांपल आई टोल्ड यू लाइक तीनों सर्विसेज मर्ज कर रही हैं, तो देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन व्हिच डू सम इवेंट्स, जैसे कोई फेस्टिवल्स पे या कोई एम्प्लॉयज के अप्रेजल के लिए कुछ सर्टेन इवेंट चल रहा है, जैसे अभी 360 डिग्री अप्रेजल की बात चलती है। तो दीज आर लाइक प्लेसेस, दीज आर थिंग्स, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स यू कैन कोट डाउन एक लिस्ट के अंदर 5-6 पेजेस का एक लिस्ट बना लो एग्जांपल्स का, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स का, जो तुम अलग अलग जगह पे यूज कर पाओगे। और मैं तो हर एग्जांपल में ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में यूज कर लेता था किसी ना किसी चीज को, एंड इट हेल्प्स अ लॉट बिकॉज आई स्कोर्ड फाइनली 167, इट वाज द हाईएस्ट इन पेपर 2 and I am sure that this was the reason how I made the answers more contemporary and more relevant, and examiner could have more related more to my answers. And regarding the sources for paper 2, I told you already, Vajiram ke 10 markers ke notes and rankers ke notes, and for some portions कुछ चीजें just go through these books. CB Gupta हो गई for TN Chhabra and CB Gupta, ऑर्गेनाइजेशनल थियरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो चैप्टर्स रेलेवेंट है सिर्फ वही, और जो टॉपिक्स तुमको लगता है कि तुमने रैंकर्स या वाजीराम क्लासेस के 10 मार्कर्स में नहीं पढ़े, ओनली रीड दोस टॉपिक्स एंड मेक योर नोट्स आउट ऑफ इट,
उसको दोबारा ऐसे नहीं होना चाहिए. उनके पेजेस बना लो कि जो चीजें तुम्हारे नोट्स में कवर नहीं है, और उनको सेपरेटली साइड में लिख दो. अपने एक पेजेस में बना के एक स्टेपल करके एक साइड में अपने बुक के अंदर नोट्स के अंदर रख दो. It'll do. बाकी industrial relations is very easy. You don't have to refer to any other source for that. Very easy. बहुत ही simple questions पूछते हैं. कई बार एक आधी जगह कुछ माफिया यूनियन ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, बट लाइक इवन इफ नो वन नोज अबाउट इट, यू कैन जस्ट थिंक कि अच्छा माफिया वेस्ट बंगाल में there was this time when they used to use this trade union as a means of like of the power of this union. जैसे यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन है, like though it's not a trade union, but how it uses itself as a pressure group to get it demands done, and often it goes to an extent where it becomes more of like a mafia thing, जो पैसा ऐंठने का काम करने लगते हैं, एक ग्रोह बना के यहाँ पे बोलते हैं. So ऐसे करके भी if you don't have really read about something, you can make up your answers very easily in industrial relations. और बाकी नोट्स तो हैं अपने रैंकर्स के और वाजीराम के 10 मार्कर्स वाले. HRM के लिए notes would do, like nothing more than that is required. I feel notes would do. Baki, yes, so there I'm done with telling you about, like, I think I completed like briefly everything, and it's been a long while I've touched the stream of syllabus. So like if there's anything missing, you can ask me questions and I'll be more than happy to answer. Great. Thank you, Himanshu. It was a very good. I was listening all the while, though I have no background in commerce or even an understanding of it. But I just wanted to share with everyone, and also it may be some information for you also, Himanshu. Usually, the impression I find among the aspirants is that these subjects, especially commerce and accountancy, not too many people qualify. But you very rightly pointed out right in the beginning, and that made me wonder. So in the meanwhile, I did this quick research on the UPSC website. They have got the latest report of 2017 exam, which is just the year before you qualified. And I just quickly even ranked all the subjects in terms of their success rate. So just to share the data, there are 44 subjects which people took up, and of course at the top are 3-4 literature subjects where the success rate is even 100%. Everybody qualified who took up, but that's because only one person took up, and that was Bodo language. So we discount all such kind of aberrations. So if we take up the other subjects, non-literature, commerce and accountancy is at rank 2. It is the second highest success rate, 12.5% of the people who wrote mains. And the first one is law. And the usual culprits, like Pol Science and PubAd and sociology, they are in second digits. They are not even in the top 10. Because of the sheer number of people who take up these subjects. Anyway, so that was very interesting for me because you mentioned that, so I thought I'll quickly do that. Now let's take some questions. So those who have questions, I will ask you to ask your questions rather than just type it in. So you can just write in the chat that you have a question or you want to ask a question, and then I'll just call out the name. You can unmute yourself, and Himanshu is here to answer your questions. So let's see. In the chat, I'm just trying to quickly. Yes. So we'll take up the first question by Prem Goyal. Prem, you want to unmute yourself and ask? Prem, yes. Go ahead. Yes, you are audible, Prem. Sir, I want to ask what type of question are asked in interviews regarding optional? Hello? Okay, so I'm here. What type of questions are asked in interview? Is that your question, right? Prem, you can type in your question. That's okay. I'll take it up. Vishal Chaudhary, meanwhile, Prem, I'll repeat it. What type of questions regarding commerce and accountancy are asked in interview? Is that your question? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So yes. So regarding interview, so like kuch fundamental questions which are always there, like if so is also from accounting services. So like what
is the accounting system in the government, and how, if you become a part of the system, would you want to change? Like, it's single entry system and it's cash basis. So like, why is it not accrual basis accounting system? Why is it not why is it not double entry system? कि ये कुछ fundamental questions, it's like every time they ask it. But also some contemporary things like if some company has done buyback, if some company has some recently been through some, like मेरे time पे ILFS crisis was like तो corporate governance काफी important portion बन जाता था. And one thing you should remember, like when it comes to mains, तो commerce and accountancy has a boundary. Like ये subjects पढ़ने हैं, because commerce and accountancy is all about like management also, it's all about investment also. So in interview, they would not just ask questions from the syllabus, they would ask questions from the whole stream. Like corporate governance is not part of the main syllabus, but it's very much, and in fact the one of the most important part of interview. Like I was asked this question about Satyam scam, like it's like history, तो अभी भी वो पूछते हैं कि Satyam scam कैसे हुआ था, had you been the CEO of the company, how would you have stopped it? So ऐसे questions, like they'll also put you in situation. Like I was also asked this question of railways के अंदर कि like imagine like situational question, like if you like I somewhere I use this term bargain. So he was like the one of the honorable members of interview board. So he asked me this question कि if you are in the situation of railway strike and वो बात नहीं मान रहे, कुछ कर रहे हैं, तो how would you bargain with them? तो ऐसे imaginative questions भी आते हैं. You have to be ready for everything. Like but make sure you go through the syllabus. जो बहुत ही fundamental parts हैं. Like you don't have to read dividend approaches and all for that. बहुत ही fundamental part, like basic system of accounting, basic principles of accounting. So and what is dividend, what is this, what is buyback, ये सब basic पढ़ के do more of situational questions for interview preparation. Okay. Thank you, Prem. Vishal Chaudhary, if you wish, you can unmute and ask. Vishal. Okay, just before you ask, Vishal, may I request those who are asking the question, at least you can put up your video, your video sharing. Yes, so that Himanshu and I are not talking to a black screen. Yes, please go ahead, Vishal. So Himanshu, actually, I have given. Can you put your mic close? You're not audible. Yes. Yeah. Is this audible? Yes. I have written 18 and 19 both mains. So what the 19 marks which you wrote yesterday only. So I was quite disappointed with the marks, because in 18 I got 198 total in paper 1 and 2. And in 19 again, instead of improving the score, although my exam was well as compared to 18, but I couldn't improve. Rather, it went down to 185 total. Okay. And in which paper this was my worst part in both attempts. So, brother, it has to be a conversation. Like, keep your mic on. So, what happened exactly, like in paper, like what I got to know, because many of my college batchmates and many of my friends again gave this attempt. So what they told me कि इस साल optional में the marks are bit on a lower side. So like it might be that reason, but anyway the score has been low. Like below 200 is not a good score in any optional. So regarding that, what you need to do, you need to practice more. What I feel. What I have 2-3 questions regarding that, like how to regarding approach for this year mains, because most probably I will be writing this year also my in the 2020 mains. So I have 2-3 doubts which I have. Like first of all, I am more focusing on the writing part. Like I am focusing on writing daily answers for the optional, both paper 1 and paper 2. For that, like what should be my approach? Like whether I should write the previous year papers well, questions well, or I should go with solely the test series thing. So regarding that, I feel 3 things which are very relevant for your mains. Your content first, then your practice second, then your presentation third. Like they form the triangle of this the theory of good marks, you can call it. So like if any of them is missing, तो final score अच्छा नहीं होने वाला है.
लाइक तुम सिर्फ आंसर राइटिंग पे सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो बट तुम्हारा कंटेंट कुछ है ही नहीं, तो अपनी प्रेजेंटेशन को फ्लो चार्ट को अच्छे करते रहो बट तुम्हारा या तो तुम पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते या तुम्हारा कंटेंट ही खराब है। तो तीनों जब तक सही नहीं होते वो वाला जो वो है पड़ा विशियस सर्कल है वो ब्रेक नहीं हो पाएगा। So make sure first thing you have your content ready, you have your notes ready. तो जैसे मैंने बताया था अभी कि कैसे मैंने नोट्स बनाए थे, you can take that approach or you can make your own approach कि कैसे मुझे नोट्स बनाने हैं, but कॉमर्स जितना बड़ा ऑप्शन है because every subject is like a complete subject of its own research, of its own study itself. So you have to make that contextual to the syllabus of UPSC and in version of your own notes. बिकॉज कॉमर्स के अंदर एक दो ही कोचिंग है, एक दो ही तरह के नोट्स आते हैं, इतने मिलते भी नहीं है। सो बट दैट यू नीड टू डू फर्स्ट, मेक योर कंटेंट रेडी, मेक योर नोट्स रेडी एंड इन अ वे which UPSC expects you to answer in the paper. So first thing you have to do that. Then second you have to practice the past year question papers which you already mentioned. And क्या मेरा जैसे था, I had this circle of 5 people. We were all very serious about the preparation. We used to make notes together. हम साथ में एक दूसरे के आंसर्स चेक करते थे, evaluate करते थे कि अच्छा इसमें ये बेटर चीज़ है, इसके आंसर में ये बेटर चीज़ है, this approach is more examiner friendly, this approach looks more interesting and it's more elaborative. तो ये भी करना ज़रूरी है. And third thing, you also need to join test series. You need to know from an expert's viewpoint what is missing in your answers, and there also tells you like sometimes commerce ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आंसर पेपर ही पूरा नहीं होता, क्वेश्चन पेपर ही पूरा नहीं होता. So there you need to also practice questions from the test series also. हिमांशु, जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ पेपर 1 में, मतलब मैंने एफएम पे ज्यादा फोकस किया इन माय प्रिपरेशन, बट ऑन द एग्जाम डे आई गॉट आफ्टर सीइंग वन क्वेश्चन 19 में क्या था कि थ्योरी क्वेश्चंस काफी थे पेपर 1 में, और मैं प्रिपेयर था प्रैक्टिकल पार्ट पोर्शन के लिए ज्यादा. तो आफ्टर सीइंग द हेलो हाँ, there was signal trouble, sorry. तो पेपर 1 में आई फोकस मोर ऑन एफएम पार्ट इन माय प्रिपरेशन, बट ऑन द एग्जाम डे पता नहीं क्या क्वेश्चंस देख के ऐसा फंबल हो गया और आई अटेम्प्टेड सेक्शन ए फॉर व्हिच आई वाज नॉट रेडी, बट उस टाइम करना पड़ा बिकॉज़ 2 क्वेश्चंस करने हैं, एंड इन बोथ इयर्स आई गॉट स्टक्ड इन फाइनल अकाउंट्स. यूपीएससी का एक रूल है, डोंट फॉल इन लव विद एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. कि पेपर में पता नहीं कुछ भी हो सकता है. यू नीड टू बी रेडी, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, यू नीड टू बी इक्वली इन लव विद ऑल द पोर्शंस, चाहे वो ऑडिटिंग हो चाहे वो एफएम हो. तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया हो सकता है, वेल एंड गुड, तुमको मिला, गो फॉर इट, बट डोंट फॉल इन लव विद एनी पार्ट और पोर्शन ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन पेपर. लाइक दैट मेक्स थिंग्स वर्क, क्योंकि कई बार होता है कि ऐसे पूछा ही नहीं भाई, जरूरी थोड़े ना इनकम टैक्स पूछा ही नहीं, तो वो डिसअपॉइंटिंग हो जाता है. तो बी श्योर कि तुम सभी सब्जेक्ट इक्वली प्रिपेयर करके गए हो. यू मे हैव योर स्ट्रॉन्ग एरियाज व्हिच यू कैन अटेम्प्ट. if you're lucky you'll get to attempt it, but ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम सिर्फ एक या दो ही चीज अच्छे से करके गए हो और वो आई नहीं. तो मेक श्योर सभी सब्जेक्ट इक्वली अच्छे से फाउंडेशन तो प्रिपेयर्ड हो. एंड वो फंबल वाली प्रॉब्लम होता है, वो बहुत बार होती है कि ढूंढना कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं कौन से नहीं करने, क्योंकि क्वेश्चन कॉमर्स में तो ऐसे होते हैं कि इतने बड़े बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, उसको पढ़ने भी लगेंगे और बाद में ये डिसीजन बनाना कि अटेम्प्ट करना है कि नहीं, उसी में पता चले 5 मिनट खराब हो गया, क्योंकि पढ़ना इतना लंबा लंबा क्वेश्चन होता है. तो वो तुम टेस्ट सीरीज जब करोगे ना, एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये वाला एरिया नहीं, ये वाला अटेम्प्ट करना ही नहीं है. कैश फ्लो जैसे मेरा था कि मुझे करना ही नहीं होता, कैश फ्लो में कभी नहीं करता था. थैंक यू. Okay, Vishal, thank you. Kaushik Darsipudi. Kaushik, you want to ask? Kaushik, yes. You're not audible, I think. I think there's some problem with your mic. Kaushik, you want to check that while I will ask Riya or Shruti to ask their question? Riya Agarwal or Shruti Agarwal? Yes, sir. Go ahead, Shruti. Good evening, sir. Okay. Good evening. Sir, I want to ask कि जैसे पेपर 1 में choice होती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड थ्योरी क्वेश्चन में, there is one side question and 3 question.
तो विच इज मोर स्कोरिंग, मतलब जैसे न्यूमेरिकल का आंसर नहीं आया तो थोड़ा पैनिक हो जाता है, तो क्या हाँ, अटेम्प्ट करना चाहिए? तो numerical, I like that's your personality and your area of interest and area of हाँ, expertise also. Like न्यूमेरिकल में mine was have interest. mine was practical all in all because I knew 15 में से मैं 12 तक भी ला सकता हूँ और मुझे रहता है फाइनल आंसर सही नहीं आया. आई टोल्ड यू Then ऑलरेडी better, राइट yeah. कि अप्रोच सही होना चाहिए. अप्रोच सही भी है तब भी 8-9 तक खींच के ले जा सकती है, बट गिवन दैट थियरी के अंदर वो हाईएस्ट लिमिट है 8-9, उससे ऊपर तुम जा ही नहीं सकते. तो I'll advise you to go more for practical, and also like even if you don't have an interest in practical, तब भी 100 marks minimum 125 attempt करना ही करना पड़ेगा. Okay, so we should And focus more on practical. more of practicals. Okay, thank you. Thank you, Shruti. Ria, you were asking a question. Ria? Good evening, sir. Good evening. सर वो टेस्ट सीरीज वगैरह का ही था सर. आपने कौन कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और प्रीलिम्स के बाद या प्रीलिम्स के पहले? मैंने प्रीलिम्स के बाद ही किया था, एंड मैंने वाजीराम एंड रवि कॉमर्स इन अकाउंटेंसी ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी. बट आई ऑल्सो टुक मेरे फ्रेंड जाते थे वहाँ पे रैंकर्स में, तो मैं उनके क्वेश्चन पेपर्स ले लेता था. और मैं रोज क्या करता था, रोज मैं एटलीस्ट 5-6 पेपर्स से 5-6 क्वेश्चंस रोज खुद बैठ के प्रैक्टिस कर लेता था. तो एक हाथ चलता रहता है ना, तो आदत बनी रहती है वो आंसर्स को लिखने की, तो वो हाथ चलता रहना चाहिए. तो रोज अभी से स्टार्ट कर दो बिफोर योर प्रीलिम्स आल्सो, लाइक यू कैन स्टार्ट इट नाउ. एक दो क्वेश्चन तो रोज लिख के, कई बार ना तुमको लाइक यू विल आल्सो नो कि तुम खुद इवैल्यूएट कर सकते हो. हाँ, इनर्शिया इज ऑलवेज देयर, बट एक बार होता है कि I also had this inertia, but once एक हफ्ता हो जाता है ना, उसके बाद 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगता है आदत लगने में. उसके बाद तुम नहीं लिखते तो प्रॉब्लम लगता है कि आज ये कुछ मिसिंग रहा आज के दिन, कि आज कुछ अच्छा किया नहीं. तो 1-2 हफ्ता लगेगा, बट देन दिस विल बिकम अ हैबिट. 1-2 हफ्ता लगेगा, बट तब तक फाइट मारनी पड़ेगी. Okay, thank you, sir. Okay. Welcome. Thank you, Ria. Kaushik, is your mic working now? You have to unmute yourself. You're on mute right now. Kaushik, unmute yourself. You need to see your screen and press the button. You're still on mute. I can see that. Anyway, while you try that, Chaitanya Reddy, if you're there, you can ask. Yes, sir. First of all, thank you, Himanshu, for your time. And my question in paper 1 is, many of the toppers have said when we write a practical question, so they say even though the question do not ask about analysis part, still we have to give the analysis. So for example, if we are doing a cash flow statement, is it necessary that at the end of the question we need to talk about the cash flow statement analysis with respect to that question? That depends. Like cash flow statement, you're not expected to give an analysis because it's a big question in itself. And explanation in questions like of like dividend approach, cost of capital model, like models वगैरह के बारे में कोई क्वेश्चन पूछता है where there is a large piece of theory. Cash flow statement में anyway there is no theory. So what will you write in the practical question also? But where there's a theory and where there's a reason that question is asked, like कोई एक approach है, एक model है, तो वो मॉडल डेवलप हुआ है, एंड इफ यू यूजिंग दैट मॉडल यू आल्सो नीड टू टेल अबाउट दैट मॉडल आल्सो, लाइक थोड़ा सा ब्रीफ में. बट कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन हो गया, इनमें कोई थ्योरी नहीं, बट इनमें नोट्स टू अकाउंट दिखाना पड़ेगा, उसमें assumptions भी क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा. Okay. So my second question is with respect to current affairs. Just now you had said merger of departments and railway, etc. So basically these rankers classes and Vajiram, they release the current affairs just 15 or 20 days before the exam. So as of now we are reading the news, but I have not made any notes separately for optional. As so and so example can be used in so and so answer. So I'll tell you, like I also made, though I had done my study once for my optional before prelims, but I need the whole notes, paper 1, paper 2 के एक महीने के अंदर अंदर मैं रोज 5-6 घंटा देता था अपने ऑप्शन को स्टार्टिंग के 1 मंथ पे, like every day I used to give 5-6 hours अपने वो नोट्स बनाने में. बट उसके बाद मेरे आगे के 2 महीने बहुत कंफर्टेबल हो गए थे रिगार्डिंग माय ऑप्शन. आई कुड कंप्लीटली फोकस ऑन माय जनरल स्टडीज, आई कुड कंप्लीटली फोकस ऑन माय एसे, बिकॉज आई गेव लाइक 1 महीना बहुत अच्छे से टू माय ऑप्शन, बिकॉज आई हैड बिल्ट एवरीथिंग. बस मैं रोज टेस्ट सीरीज जाने से अपना कोई भी टेस्ट जाने से पहले 3-4 घंटा पहले रिवाइज भी कर लेता था. इट वाज डन.
और रोज 1-1 घंटा पढ़ना रिवाइज करना दोबारा बहुत ईजी हो गया था, क्योंकि एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने में, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में 5-6 घंटे में रिवाइज कर लेता था, बिकॉज आई हैड माय नोट्स रेडी फॉर दैट. नहीं तो उसके लिए भी मुझे 2-2 दिन दोबारा रिवाइज करना पड़ता. सो यू हैव टू गिव स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा टाइम फॉर मेकिंग योर नोट्स, बट इट हेल्प्स यू अ लॉट इन द सब्जेक्ट लाइक कॉमर्स एंड अकाउंटिंग. And regarding current So no, affairs, there are no such current affairs which coaching only will give you. Like वो देते हैं लास्ट में कुछ कुछ, but commerce and accounting ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसमें कोई certain current affairs होते हैं. It's just something which comes in your mind. And current affairs not, it doesn't has to be like this happened this year. Like एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन है, वो 4-5 साल से चल रहा है, वो तब भी आज भी करंट अफेयर है. और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में तो कब का सत्यम इवेंट इज आल्सो करंट अफेयर अभी भी. यू कैन आल्सो मेंशन दैट. तो contemporary example you just have to use which you picked up from like places around you. okay. So my third question is, when we read from paper 2, after reading rankers classes, is it necessary for each and every topic to Google again and see if there is anything extra from Google? And If you think you haven't got the like perfect answer कि उसके अंदर बहुत ही कम लिखा है, like on a model itself there's just 2-3 lines which the notes have given, because there are many places where the notes have done that. So you can Google it over there, because 10 markers में वो सीधा का सीधा वो model पूछ सकता है, वो approach पूछ सकता है, वो theory पूछ सकता है, and you need to write substantial stuff there. तो उसके अंदर you can just Google like what is this and this, and if like make your own piece of paper कि 10 mark के लिए ये enough होगा इस चीज के अंदर, and it's done. You can do that there, but अगर if there's enough literature available on any particular topic, you don't need to Google it like further and further. so I do last one. I don't know whether I can ask this or not. With respect to making notes, I always have this doubt to what extent I should do, how much should I do. So if you have done anything during your preparation, if you can share that online on your blog or somewhere else, it would be of great. I've actually given it to some of my college batchmates who were giving, and I told them to like make sure कि वो एक certain place था ORN में, he was also asking for it, to give it to them. But I'm not sure like if they've given it to them or not. So I can't promise you that, but I'll do some arrangement कि वो वहाँ तक पहुँच जाए और it gets available for people, because it's very nice piece for paper 2 notes. Like Yes. it could have served as like one single source for everything. But I'll make sure I'll do that. Sir, Like, we are not in Delhi, sir. So हाँ, you can anyway like online भी available कराने के लिए I'll do something कि वो online scan करके I could upload it. so if we have to contact you other than this platform, is it possible? हाँ, you can like all of you can note my email ID himanshu.nagpal08@gmail.com. You can post your queries or anything over there. Sorry, sir. Himanshu dot. Nagpal08 NAGPAL Okay. 08@gmail.com. Okay. Thank you, sir. No problem. Thank you. So Rahul Lohia, you wish to ask? Rahul? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Hello, how are you? I'm good. I'm doing. How are you? I'm also fine. Sir, so I have 3 questions. One second. I have 3 questions. So first is, like you said about notes. I'm also making my notes from ranker classes and some portion from C.B. Gupta and like T.N. Chhabra. Sir, so these are to be like crisp and precise notes, like short bullet forms, or these have to be elaborate form? Like, for example, These have to be like उसके अंदर you just mention points ना, जैसे limitation ये है, एक word के अंदर mention कर दो, because Okay. the theory you'll know, like वो अपने आप पेपर में आएगा, वो mention मत करो. जैसे मैं क्या करता था, like I'll show you, जैसे किसी की limitations है ऐसे, like I'm not sure like how do we turn around the camera. हाँ, जैसे for example like ये limitations है कि ये cost effective नहीं है, like that, like मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसे करता था, because I don't remember exactly like क्या क्या होता था. And large structure ये एक limitation हो सकता है, एक किसी मॉडल का cost effective नहीं है, इसका large structure है, फिर ये people will lose motivation, ऐसे ऐसे करके like चार्ट बना के मैं अपने नोट्स बनाता था कि so that मेरे को बस वो पॉइंट्स याद रहे जो मेरे को वहाँ मेंशन करने हैं. Right. ठीक है, Right. पूरे इसकी एक्सप्लेनेशन अपने नोट्स में मत डालो.
Okay. So my another question is I'm revising OT and HRM right now, OT, HRM, but OT and HRM particularly are taking a lot of time. Like I'm also making notes along with this. So is it normal to that it is taking time, or it is हाँ on काफी टाइम लगता है स्टार्टिंग में टू मेक योर नोट्स बिकॉज यू डूइंग इट लाइक you're making you're making your job easy for the future, so you are investing that future time like right now. So like it will take your time abhi, but it will help you immensely in future. अभी अगर तुम अच्छे से notes बना लेते हो तो 5-6 घंटा अपने रोज दो कॉमर्स को till your means. कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है but it will help you a lot. Okay. क्योंकि लास्ट में आते आते जीएस इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसको टाइम देना पड़ता है और तुम अपने ऑप्शन से हटके उसको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा. By the way, I'm appearing in 2021. So हाँ then तो it's perfectly fine यार. मुझे लगा like you giving this no. अभी ये वाला अटेंड ना. Appearing in 21. Sir. हाँ And it's fine. Please go. Third question is like in paper 2 particularly, I'm facing problem in solving question like those are statement based. Like for example, any statement is given and then in its comment, discuss, elaborate, like those questions. So I'm not getting where to head toward. Like what the question is demanding from me, and many times I misunderstand that what the question is demanding, and what I'm replying to it. So like wait, if you could just wait 1 second, I could open one of the papers of commerce and accountancy and I could have told you like इसमें क्या है. Sure. That would have helped you a lot. Please just wait for a second. So often it happens क्या होता है कि वो वाले क्वेश्चंस ना सच में बहुत डिफिकल्ट होते हैं कि एक स्टेटमेंट दे दिया, किसी ने बोला था इसमें क्या मतलब है, लाइक बताओ. बट कभी ना कभी कुछ समझ आ ही जाता है कि अच्छा दिस इज व्हाट इट मस्ट बी आस्किंग, कि ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं, बेनिफिट्स पूछे हैं, लिमिटेशंस पूछे हैं, या एक एनालिसिस पूछा है, या एक क्रिटिकल एनालिसिस पूछा है. तो उसके अंदर समझ आ जाता है लाइक थोड़ा पढ़ने के बाद भी. बट आई विल ओपन अप वन पेपर एंड आई विल टेल यू लाइक कि इसके अंदर क्या हो सकता था जैसे. Right. Thank you, sir. Is it clear? So any other questions? Okay. I'll just open up the paper otherwise. Yeah. No, I'll move on while you open up the paper. I mean, I think Rahul is done. Yes, sir, I'm done. Yeah. I'm done. Kaushik, is your mic working now? Yeah, can you hear me, sir? Yes. No? Yes. You're audible. Yeah. My question is that my question is with regards to paper 2 specifically. Like when I'm trying to solve the past year questions, I cannot actually know if I'm writing a proper answer or not, especially when when they're not available in the market. Yes. So what do you people I can actually do? Like there are around 40 people around here. You can share each other contact and make your own group 5-6 लोगों का, because commerce के अंदर it's one of the difficult thing to find people who you can share your stuff with. So like I had made this group from coaching only. Like they were very serious about preparation and we could evaluate each other's answers. And past year के answers भी नहीं मिलते हैं यार उसमें, commerce में ये problem रहता है. तो what you people can do, you can actually make your own group and you can share stuff with each other. You can share your answers for evaluation. You can share comments with each other. Okay. But the problem is like this year we couldn't go to any coaching classes, right? Even I Hello. wanted to ask about assessing answers, especially with respect to paper 2. Can you put your mic close? Yeah, Yes. sure. I wanted to ask the same question the other member asked about assessing our own answers, for paper 2, as the model answers are such. Tough to tell, because how I Yeah. started evaluating my answers was once I got the answers evaluated from people who were selected, who were from my teachers, from my college professors, from coaching के जो teachers रहते हैं उनसे. There I got the idea of like what a good answer can be. So what I can do to help you people out there is like Sunday को I can just I can't like जैसे 1-2 answers भी evaluate करूँगा, like I'll tell you कि अच्छा इसका answer ये हो सकता था, this is where you're missing. Like don't write too much. Like often with what happens कि पूरे के पूरे 2 पेज लिख दिए. Make flowcharts, make trees, simple कि examiner की life easy करनी कैसे होती है. So I can help you there कि like Sunday को I can try to evaluate like 5-6 answers. Otherwise, as I told you already, you guys can get along and make a group and Yes, share your yes. own answers. यार बहुत easy होता है.
Yes. That will be the best thing, I think, sir. Yes. Sure. Or Shikha Singh. Shikha, if you're there. No? Okay. Sheetal Bhambu. Sheetal. Sir, sorry to interrupt. Can I say something? Oh yeah, if you Hello? found your question, Shikha will come back. Sir, I have posted. Oh, sorry. You posted, so I'll take it up. Let's Shikha, you can ask Sir, your I question. posted. Sir, hello? Yes, Hello. Shikha. Hello? Hello. Yes, you're audible. Am I audible, sir? Yes, you're audible. Sir, I'm approaching 2021 examination. So how much time should I give now to the optional subject? Abhi, for the first month, as I told you already, like give a lot of time to your theoretical. Theoretical, I mean like paper 1 का जो 125 130 marks का जो theoretical आता है ना, also paper 2. Build your notes, build your idea. Notes किसी अगर तुमको लग रहा है कि like I can't make notes, एक general एक papers के अंदर वो तो आइडिया तो रहना चाहिए ना कि इस मोटिवेशन चैप्टर के अंदर ये चीज है, ये अप्रोच है, उसके अंदर ये चीज है, एंड दिस इज लाइक आई नीड टू रिमेंबर. Yes, sir. तो जल्दी एटलीस्ट इन 1 month व्हाट यू कैन डू इज एटलीस्ट डू इट वंस और ट्वाइस 2 बार कर लोगे तो अच्छा रहेगा 1 महीने के अंदर. उसके बाद यू कैन फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल. रोज 1-2 घंटा उनको दो 2-2.5 घंटा लाइक इफ इट्स पॉसिबल. एंड देन ऑल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो ना, कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, क्वेश्चन पेपर्स पास के क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करोगे, उसके लिए भी टाइम चाहिए, एंड जीएस आ जाएगा फिर. तो अभी स्टार्टिंग में गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू योर theoretical part of optional. Okay, sir. And sir, the most tougher part for me is practical subjects like cost accountancy, and income tax. So, means if I want to do all the 3 side by side, so is it good to do, or one by one subject should I do? If it's Hello? हाँ यार, एज इट्स अ जनरल सेइंग कि अगर किसी चीज में अच्छे नहीं है तो जब वो कर रहे हो ना, फोकस मोर ऑन दैट, बिकॉज ओनली देन कई बार क्या होगा, कोई गलती करी, नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल नॉट डू दैट मिस्टेक. बट व्हाट इफ यू डू लाइक एक क्वेश्चन इसका किया, एक क्वेश्चन किसी और का किया, तो वो गलती दोबारा होगी, अगली बार जब करोगे गलती होगी, हर बार होगी. तो मेक श्योर जब इफ यू फील यू डोंट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल ग्राउंड, तो उसके अंदर एक बार अगर एक सब्जेक्ट कर रहे हो 2-3 घंटा एटलीस्ट उसको दो. जैसे पूरा अकाउंटेंसी का कर लो, फिर इनकम टैक्स कर लो, तो वो जो लिमिटेशंस तुम्हारी है ना, वो प्रैक्टिस के साथ सही हो जाएंगे. Okay, sir. Thank you, sir. I think there is one more Hello, Shikha. sir. Sheetal this. Sheetal, go ahead, Sheetal. Then after that we'll take Shikha. Yes. Yeah. Hello, sir. Sir, I just wanted to ask. I always face a issue of time management while writing the answers. So can you just elaborate like how to manage time while writing the answers and solving the practical questions? practice that's a like otherwise it's very difficult, because पहली चीज कई बार क्या हम होता है कि वो क्वेश्चन उठा लेते हैं which is like I did in paper 1 and I still regret it. I'll regret it for my life. कि ऐसा क्वेश्चन उठा लिया, आधा घंटा सिर्फ 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए लगा. when you started Yes, you also sir, like exactly feel like that finishing it. हाँ, just make sure first thing you do is not select those questions which are so much time taking. वो क्वेश्चन उठा लिया तो पहले ही बेड़ा गर्क हो जाएगा, मतलब वो पहले ही मूड ही खराब हो गया. Yes, sir. Sir, plus I wanted to ask that like practical, like when they ask a model like Gordon model, any model, should we give illustrations? Like, is it compulsory? Like, the illustration हर questions में सर बहुत confusion होता है where to put the illustrations and not to put the illustrations. Yeah. अच्छा, sir, illustrations, about the illustrations. Yes, sir. हाँ, Yes. जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में पॉसिबल हो, बट wherever it is possible, wherever it is practical, put it there. कि जहाँ पर मतलब पेपर 2 के अंदर तो it's very much possible कि कहीं कहीं illustrations आता रहा हो. और जैसे कुछ कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स जैसे बायबैक है, like everywhere हर साल कितनी कंपनीज बायबैक करती हैं, तो वो तो very easily you can put examples. एंड जब डायरेक्ट इफ यू जंप टू पेपर वहाँ पे सोचने लगोगे तो कोई इलस्ट्रेशन नहीं आएगा. बट व्हेन यू विल बी मेकिंग योर नोट्स ना,
उस टॉपिक को गूगल करके कंटेम्प्रेरी लिख दोगे तब भी 2-3 चीजें लाइक आ जाएंगी. तो Okay, sir. while you're making your Uh, notes and when you're doing your revision, तभी इस चीज पे ध्यान दोगे तो पेपर में automatically it'll come in your mind. Yes, sir. Sir, I want to ask, paper 2 में sir, I have made notes for all the subjects from the notes from the coaching. So sir, अभी confusion revision करते टाइम ये होता है कि should I open the book or revise my own notes? तो सर बहुत confusion होता है, वो duplication हो जाता है फिर and it takes too much of time. Then revising notes or opening the book, सर बहुत confusion होता है that time. So sir, अगर तुम्हारे notes, if your notes are very good now, you'll be very much confident of it. You'll not have to go to your books back again and again. So either you make your notes very nicely, give substantial time, invest good amount of time for your notes. If your 2021 attempt, तो कोई problem नहीं है, अच्छे से notes बनाओ, बिल्कुल प्यार से. If 2020, just make sure कि थोड़ा जल्दी if you can do, like it's very much, it's good. yes sir. But अगर लग रहा है कि नहीं बनाने आते notes और time मन भी नहीं करता, like some people don't feel like making notes, then make sure at least वो तो बनाओ कि तुम्हारा पेपर से पहले 2-3 घंटे पहले भी एक बार पलट के देखो कि याद आ जाए सब कुछ. अच्छा ये था. But it's always good, I feel, in commerce and accountancy at least, to make your notes. Okay, sir. So thank you, sir. Thank you, so much. Sheetal. We'll take last 2 questions and then we'll take up a sample question from the paper which Rahul has found out. Shikha, there's another Shikha. I think you also want to ask. Shikha. Hello. Yes. Yes, sir. This is Shikha. Good evening, sir. I have 2 questions. Good evening. First one is that, sir, I have 2 questions. First one is that, should we take both test series for GS and optional, or should we take only GS or only optional in this 3 months time I period? think you should take both. You should take both. There's no doubt to it. Both of things are totally separate, totally different, and it's like comparing cats and dogs. Totally different things. You should take both the test series. Yes, sir. But last year I have taken optional test series. But that's why I asked you again. I should take both the test series, or should I take only one? Still, you should take both the test series because I feel practicing is the way. Practicing is the key. I didn't take coaching, but I took test series like very seriously because रोज ये रहता था कि एक टेस्ट जब लिख दिया तो 3 घंटा अच्छे से एक चीज प्रैक्टिस हो गई. क्योंकि कॉमर्स की टेस्ट सीरीज में कितने 6-7 टेस्ट पेपर्स होते हैं, इतने तो सॉल्व करने ही चाहिए. एंड सिमिलर फॉर जीएस, 8-9 टेस्ट पेपर्स उसके सॉल्व करो, 6-7 टेस्ट पेपर्स इसके सॉल्व करो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके या उसके, बोथ होते हैं इक्वली इंपॉर्टेंट. Okay, so my second question is that just you said you need to be very presentable, content oriented. So my question is that sir, suppose there is a question of merger, okay, and that is a practical question. So how will you approach it? Now you'll ask me like उसमें presentation क्या अच्छा करेंगे? Like that simple merger है तो it's merger. हाँ, you just do it right then ना. Presentation I meant more for theoretical questions. And merger के अंदर भी question I feel like you taking some assumption, mention it rightly below the answer कि अच्छा this is the assumption, point wise 1, 2, 3 I took. This is the notes कि अच्छा ये वाली चीज maybe it's not clear to the examiner, so I specifically mention it my notes to accounts के अंदर जो mention करते हैं. So that is presentation. ऐसा कुछ स्पेशल फंडा नहीं है प्रेजेंटेशन का. वो थियोरेटिकल में ठीक है, फ्लो चार्ट्स वगैरह बना लिया, बट प्रैक्टिकल में तो लाइक मेकिंग अ वेरी क्लियर आंसर, अ वेरी थॉरो आंसर इज ऑल much you can do for your presentation. Okay, so thank you so much, sir. Thank you, Shikha. Welcome. So we'll take the last question by Shivam Dohalia. You have to unmute yourself. You are still on mute, Shivam. स्क्रीन पे एक माइक दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर दो. शिवम. Seems difficult. Shivam. No, you are still on mute, Shivam. I can see that you are on mute, so I think the mic is problematic is writing. So yeah. Right. Okay. So you type in your question. I'll read it out for you. So meanwhile, Himanshu, Rahul has typed the question. I'm sure you can read it also. Virtual organization emphasizes validity and growth. I'll just take up that
question which someone asked कि paper से कोई ऐसा comment वाला question हम्म, paper अभी खुल गया जैसे question है maximization of profits is regarded as the proper objective of investment decision but it is not as exclusive as maximizing shareholders wealth quote and quote comment so like एक general statement दे दिया and just comment like you don't know what the examiner is asking so the two words that will take you maximization of profits and maximizing exclusive as maximizing shareholders wealth two words all shareholders wealth or maximization of profit both like all of us know how important is this topic in paper one के अंदर जो financial management का पहले chapter होता है shareholders wealth versus maximization of profit तो you can easily guess कि like all you just need to mention इसके अंदर shareholders wealth क्यों important है and why this approach of maximization of profits can actually result in a bad shape for company in long term that is all what it is asking like because if you have done your syllabus well and all your notes well you'll know like what this examiner is asking there's always one side like इसके अंदर always like there's nothing कि you can write something good about maximization of profit it's always shareholders wealth which you keep in priority और कोई क्वेश्चन अगर किसी को लगता है कि like which needs better comment वगैरह I would like to ask. So Shivam's question actually is Himanshu. Can Am I you? audible, sir? Yeah, now you're audible. You can ask yourself, Shivam. Yeah. Hi, Himanshu. Hi. I think it can't be more than enough told that note making is important. Test series are important. Writing answers is important. So on and so forth. But I guess what is important at this point in time for me to know is like I have prepared my work. I've done my background work. I've done my hard work. Now I am straight into the exam. I have my paper right in front of me. I have the 20 odd questions in front of me. How do I go through those three hours with the paper 1 and 2? Yes, that's that's in fact the best question, which is most relevant. Because I also felt the same. So what I had this approach कि मैं पहले 1 घंटे के अंदर I'll make sure मैं अपने 10 markers सारे के सारे बढ़िया से खत्म कर लूँगा. Because often it happens that confidence is a process which comes with your actions. कि अगर actions अच्छे हैं, like you're proud of it, तो confidence अपने आप आता है. Confidence के साथ बहुत सही चीजें हो जाती है. Like अगर एक बार starting 1 घंटा खराब हुआ ना, अगले 2 घंटे there's a very high chance खराब ही होंगे. I guess तो पहला 1 घंटा जो theory में देना है. I guess 10 markers have a single line statement, so it's easier to read Single and line understand. statement and you don't have to select there. You have to answer. Right. So वो अगर वो अच्छे से कर लिए ना तो काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है which like mind is on right place then ना तो वो सही क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा प्रैक्टिकल भी सही जाएंगे क्योंकि your mind is thinking right and it's happier a happier mind is like a more ignitive mind so that will work that works well for me and I can promise you that will work. Thank you so much. Yeah. Welcome. Okay, so with that we have come to the closure of this session. I hope it was useful for everybody here. Some of the participants have left. And thank you, Himanshu, for doing it. I know out of a busy schedule. That's why we organized it quite late in the evening. I mean, it's almost night when we started it. So thank you very much. It was, always a planned activity that we had decided last year that we will have a session. But somehow it could not happen. But this is now much more focused and targeted discussion with the aspirants itself. And thanks to COVID in a way, thanks to technology as well, we are able to talk to so many people spread across the country. Otherwise, people don't get to interact with people who have cleared already and while they're in the service. So I wish you all the best, Himanshu. I'm Thanks sure so you, much, sir. you are doing good work. Thank you so much for having me here, for giving such excellent crowd. It was so much interesting and it was really amazing. Yeah. After it's been 2 years, I lost you in the classes and it's this time now. It's really amazing. Yes, thank you. Thank you, everyone. Thank you. Good night. Take care. Thank you so much. Please, everybody take care. All the best for your exams. Thank you.